Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the oligosaccharides. So let's move to the whiteboard. Now, the oligosaccharides first of all, I'm going to define the oligosaccharides, that is the second category or type of carbohydrates. So, the carbohydrates which upon hydrolysis yield two to 10 monosaccharides. Or monosaccharide units are called oligosaccharides. Clear? So that is the definition of oligosaccharides. ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जब उनका हाइड्रोलिसिस हो, मीन उसका जब ब्रेकडाउन हो, तो कम से कम 2 मोनोसैकेराइड और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मोनोसैकेराइड्स उनसे मिलें. So that very carbohydrates are called as oligosaccharides. Now, some features. Characteristics. Number one, they are less sweet in taste as compared to monosaccharides. Number two, they are less soluble in water as compared to monosaccharides. Number three, they are present in the form of disaccharides, yield to monosaccharides. Disaccharides or trisaccharides or tetrasaccharides or
pentasaccharides or hexasaccharides or heptasaccharides or octasaccharides or nonasaccharides or decasaccharides. So decasaccharides that yields 10 monosaccharide units. तो स्टूडेंट्स इनमें हमने बात की थी कि 2 से लेकर 10 मोनोसैकराइड यूनिट्स यील्ड करते हैं। ऐसे ओलिगोसैकराइड्स जब उनका हाइड्रोलिसिस हो और उनसे 2 मोनोसैकराइड यूनिट्स मिलें तो दे आर कॉल्ड एज डाइसैकराइड्स, जिनमें 3 यील्ड हों दे आर कॉल्ड एज ट्राइसैकराइड्स, tetrasaccharides which yield 4, pentasaccharides which yield 5 monosaccharide units, hexasaccharides which yield 6 monosaccharide units, heptasaccharides which yield 7 monosaccharides, octasaccharides which yield 8 monosaccharides, nonasaccharides which yield 9 monosaccharide units, and decasaccharides which yield 10 monosaccharide units. तो इसी तरह से हम इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं ओलिगोसैकराइड्स की, बट अमंग देम डाइसैकराइड्स आर मोस्ट अबंडेंट. क्लियर? अमंग देम द डाइसैकराइड्स are most abundant among the oligosaccharides. Dear students, what are disaccharides? The oligosaccharides yielding 2 monosaccharide units are called disaccharides, and their general formula is this is the general formula for disaccharides. It is C12H24O11. Clear? And biologically important disaccharides are number 1 is maltose, which is called as malt sugar. It is called as malt sugar, or it is also called as maltobiose. Clear? Dear students, maltose जो है, it is combination of 2 monosaccharide units which are glucose. It is formed when alpha amylase, that is the enzyme, acts on starch and yield
maltose. And this is what happens it happens usually in germinating seeds. सो डियर स्टूडेंट्स, इसी वजह से चूँकि जर्मिनेटेड सीड्स में ये प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो इस वजह से इसको माल्ट शुगर कहा जाता है, क्योंकि उसी से ही ये जो माल्ट्स होती हैं बेवरेजेस, वो इसी प्रोसेस के जरिए जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर ही ये सारा कुछ हो रहा होता है, वहाँ पर ऐसे बन रही होती है. सो माल्टोस, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ or which upon hydrolysis forms glucose plus glucose. The second one is sucrose. Sucrose, it is called as the cane sugar, or it is also called as table sugar. जो आम तौर पर हम जो चीनी इस्तेमाल करते हैं, टेबल शुगर, दैट इज़ बेसिकली सुक्रोस, और इसको केन शुगर भी कहा जाता है. एंड डियर स्टूडेंट्स, सुक्रोस जो है, इट इज़ फॉर्म्ड, इट इज़ a disaccharide which upon hydrolysis yields glucose plus fructose. Clear? And biologically this is very important, and physiologically also. And the third one is lactose, which is called as milk sugar. When it is hydrolyzed, lactose yields glucose plus galactose. Clear? So these are three biologically and physiologically important disaccharides. Now, here is given its structure and formula in the form of glycosidic linkage. And here I'm also going to define what is glycosidic linkage or glycosidic bond. It is very, very important regarding the short questions. पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, उसके बाद इसको ड्रॉ करेंगे. So the bond formed between two monosaccharides is called glycosidic linkage, and it is represented by COC. Clear? Now here I'm going to draw the glycosidic linkage. So this is the ring structure of glucose. Clear? So this is
Here is H, OH, H, OH, OH and H, OH and H. So this is glucose or D-glucose. Clear? Or glucopyranose. Clear? Plus this is fructose or fructofuranose ring. So here is CH2OH, here is OH and H, OH, OH and H, here is CH2OH. Clear? Now I am going to give the numbers. Carbon number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Here is carbon number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Clear? So what will happen? Dear students, अब आपने देखना है कि कार्बन नंबर 1 के पास है फ्री OH और इसी तरह से कार्बन नंबर 2 ऑफ फ्रुक्टोफ्यूरानोज, दिस इज फ्रुक्टोफ्यूरानोज. क्लियर? तो इसकी कार्बन नंबर 2 के ऊपर फ्री OH ग्रुप मौजूद है. यहां पर क्या होगा कि ये दोनों OH में से 1H यहाँ से और OH यहाँ से, ये यहाँ से रिमूव होंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर. यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा और बाकी सिर्फ क्या बच गया इनमें से O, और इस ऑक्सीजन के ज़रिए ये दोनों कार्बन्स आपस में लिंक हो जाएंगी. दैट वेरी लिंकेज इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. CH2OH and H and OH, H, H, OH, H and OH. ठीक है? And now here is the carbon number 2 of fructose, H, CH2OH, OH and H, H and OH and CH2OH. Now the carbon numbering. This is carbon number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स इनके बॉन्ड की तरफ. तो यहाँ से ये 2 OH थे,
इसको यहाँ पर देखिएगा, OH एंड OH, तो एक H यहाँ से और एक OH यहाँ से निकल गया, ठीक है, और बाकी क्या रह गया स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन, और इसी ऑक्सीजन के जरिए इनका आपस में लिंकेज होगा इन दोनों कार्बन्स का। सो हियर वी गो, दिस इज द रिमेनिंग ऑक्सीजन, दिस वन। तो यहाँ पर देख सकते हैं COC, यहाँ पर एक H रह गया। So now this is complete. So that very linkage is called 1,2 carbon number 1 of glucose and carbon number 2 of fructose, 1,2 glycosidic linkage. And now glucose plus fructose, they are called as sucrose. It forms a disaccharide which is called as, this is sucrose. Clear? So that is a disaccharide and a very important disaccharide. तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से ये इनके अंदर बनते होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन दिस इज। तो जब ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो उसको आपने डिफाइन भी करना है और इसका स्केच भी ड्रॉ करना है। आमतौर पर वैसे स्केच के तौर पर ज़्यादातर पूछा जाता है, ड्रॉ द स्केच ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो आपने उसमें ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर जो है ये कंप्लीट इसी तरह से ड्रॉ करना है। या फिर आपसे वैसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो आप उसको डिफाइन करेंगे और लाजमी आपने इसके साथ ये स्केच भी इसका ड्रॉ करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। और डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रखिएगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सो इसका स्केच भी याद करना है और इसकी डेफिनेशन भी याद करनी है। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे पॉलीसैकेराइड्स को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।